welcome to Millions by Jupiter. My name is Deepansha Dinghra and today we are going to discuss just how much it costs to live 4 hours away from Mumbai. Pune is the Oxford of the East. It is the Queen of Deccan or सबसे important. It is the topic for today. So just how good is life in Pune? एक अच्छी life के लिए चाहिए एक अच्छा घर, which in Pune is relatively easy to find because of the vast infrastructure development in the city. The Ease of Living Index 2018 report released by India's Ministry of Housing and Urban Affairs said that Pune is the top Indian city among 111 urban clusters in terms of livability. लिवेबिलिटी मतलब पुणे में रूममेट नहीं फ्लैटमेट होते हैं। हमारे जमाने में ना एक रूम में 4 लोग रहते थे, वो भी एक बाथरूम के साथ। और अगर आपको भी ऐसे रहना हो तो आप भी मुंबई जा सकते हो, बहुत सारे पैसे देके बहुत छोटी जगह में रह सकते हो। And that is what makes Pune special and why it is the top city in terms of livability. Because even at the best localities of Pune like Goregaon Park, where there are parks, pubs and everything in between, a 1 BHK should cost around 20 to 25,000 while a 2 BHK should cost around 30 to 45,000. Around the same rent you can choose to live near the airport at the very upmarket Viman Nagar, which has all the fancy hotels and stores for all the big brands. Even on the outskirts in places like Kothurud, the development is so good that it has been entered into the Guinness Book of Records as the fastest developing suburb in Asia. It is close to the IT hubs in Vakad and Baner, and the rents are even cheaper with a 1 BHK house going for around 15,000 and a 2 BHK house going for 20 to 30,000. Real estate में पैसा invest करो, कभी नहीं डूबता। ये बात आपको समझा चुकी हूँ अंकल। रियल एस्टेट में पैसे डूबते भी हैं। Watch this video to find out more, or you can find this video at the end of this video. But हाँ, it's also good for investment because rental yield in Pune is much higher than cities like Mumbai. और IT hubs के पैदा होने की वजह से areas like वाकड़, विशाल नगर, पिंपरी चिंचवाड़, even हड़पसर, जहाँ पहले सिर्फ खेत होते थे, वहाँ आज बिल्डिंग्स हैं, जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। बस अब एक तो मैकडॉनल्ड्स बन जाए तो यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स भी बढ़ जाएंगे। For now, rents in these areas are cheaper, around 12,000 to 15,000 for a 1 BHK and around 20,000 to 25,000 for a 2 BHK. This is like the theme of Pune. Cheaper and better. Even your electricity bill will be lower here क्योंकि यहाँ ठंड अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समर्स वार्म हो गए, लेकिन for the most part of the year you won't need an AC. So your electricity bill should be around 1,000 to 1,500 per month for a 1 BHK and around 2,000 for a 2 BHK. इंटरनेट का भी स्टैंडर्ड रेट है 1,000 to 1,200 per month, जिससे you can play PUBG लैग फ्री। हाँ बोला मेरा भी चिकन डिनर। हाँ, और अगर तुम पुणे में फूड ऑर्डर करके ही जीते हो तो योर मंथली कॉस्ट विल कम अप टू 6,750 रुपीज, अज्यूमिंग कि आप नाश्ता तो एटलीस्ट घर में कर लोगे, एंड योर कॉस्ट पर डे फॉर 2 मील्स इज 250 रुपीज। पुणे में डब्बे वाले भी होते हैं, दे चार्ज अराउंड 4,000 अ मंथ एंड प्रोवाइड घर के जैसा खाना। और इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल मिलेनियल और जेन ज़ी और बूमर और व्हाटएवर एंड यू डिसाइड कि घर का खाना ही खाना है अपने या कुक के प्यारे हाथों से बना हुआ, तो द मंथली ग्रोसरीज बिल कैन गो टू अराउंड 4,000 to 6,000 रुपीज। इसमें दाल, रोटी, सब्जी, फल वगैरह सब आएगा। रही बात कुक की, you can get help with cooking and cleaning your house for around 3,000 to 5,000 a month. Now, even if you get a cook or cook yourself or order out, there will be times when you will find yourself at a restaurant eating out, or if you're lucky and have friends, partying. ये दोस्तों जैसी luxuries तुम पालते हो तो eating out and parties will cost you around 3,000 a month and another 1,000-1,500 if you drink alcohol. Surprising बात ये है कि in some places alcohol costs more in Pune than Mumbai, even for the same brand of pub. बट ठीक है, एटलीस्ट बैठने के लिए एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी तो मिलेगी। तो रोटी, कपड़ा, मकान सब सेट हो गया। अब काम पे कैसे जाओगे? पुणे में मेट्रो नहीं है, बन रही है, एंड इट इज द कंट्रीज फास्टेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट टू रीच द माइलस्टोन ऑफ ट्रायल्स व्हिच हैपेंड इन जस्ट 30 मंथ्स। बसेस भी चलती हैं, लेकिन उनके रूट समझना या उन पर डिपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मोस्टली बिकॉज पुणे इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली और आउटस्कर्ट्स में जहाँ कॉलेजेस हैं, टेक कंपनीज हैं, वहां तक कई बसेस अभी जाती भी नहीं है। इफ यू कंपेयर द 1997 to 98 Pune Municipal Corporation's Environment Status Report to today's reports, there's a 895% growth in 4-wheelers, 400% growth in 2-wheelers and only 2.6% growth in the civic bus fleet. तो शायद बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी गाड़ी खरीदनी पड़े या एटलीस्ट रिक्शास और टैक्सीज पर रिलाई करना पड़े, और अगर उन पे रिलाई करना पड़ा तो add another 2,500 rupees per month for transport. हमारे जमाने में ना हम 10-10 किलोमीटर पैदल चल लेते थे रोज। हाँ, ये भी कर सकते हो, and you might
decide to walk even if you buy your own car because traffic in Pune is very bad. Because of the difficulties in public transport, Pune has 753 vehicles for every 1000 people. मतलब यहाँ गाड़ी एक स्टेटस सिंबल नहीं, जरूरत है। और इस वजह से इतनी ट्रैफिक है कि शायद आपको चलना ही बेहतर लगे। एटलीस्ट थोड़ी एक्सरसाइज तो हो जाएगी। हाँ, और अगर तुम एक्सरसाइज के बारे में सीरियस हो तो पुणे में जस्ट लाइक मोस्ट अदर सिटीज देयर आर मेनी जिम्स इन मोस्ट एरियाज। दे कॉस्ट अराउंड 1 to 4000 पर मंथ एंड ये कॉस्ट डिपेंड करता है इक्विपमेंट और आपकी जरूरतों पर। अगर मेंबरशिप लेके घर पे ही बैठना है तो 1000 में भी काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। बट अगर घर पे बैठना इज नॉट एन ऑप्शन देन देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन एंड अराउंड पुणे टू एक्सप्लोर। देयर इज लोनावला, लवासा, महाबलेश्वर, ऑल एट ड्राइविंग डिस्टेंस। इफ जस्ट साइट सीइंग इज not enough, you can go to the vineyards in Nasik or even treks. Pune was the Marathas capital for almost 100 years and so there are many forts around here. Lohagarh Fort, Siagarh Fort are all beautiful sites to trek. The cost of doing these trips is minimal. पेट्रोल या बस का खर्चा और खाने पीने का खर्चा, बाकी सब तो वैसे फ्री ही है। फ्री? क्या फ्री है? मुझे भी चाहिए फ्री में कुछ, लेकिन हर चीज मुफ्त के भाव में नहीं मिलती। If you want to do something normal on the weekend like watching a movie with popcorn, then that can set you back around 2000 a month. टिकट 300 की होती है, मतलब 2 लोगों के लिए 600 और पॉपकॉर्न 400-500 के आसपास। You can go watch a movie alone also, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबके पास कोई अपना नहीं होता टिकट खरीद के पॉपकॉर्न शेयर करने के लिए। अरे बेटा, पहले बोलती, लड़कों की लाइन लगा देंगे हम। बोलो कैसा चाहिए, कैसा वाला चाहिए? लंबा, पढ़ा लिखा, गवार, सब टाइप के मिल जाएंगे मेरे पास। अंकल प्लीज यार, अब वीडियो में तो शादी खेलना मत शुरू करो। By the way, speaking of going out, if you love shopping, Pune has all the big brands and a killer street shopping scene. There's Fashion Street and more importantly, FC Road. If you live in Pune, FC Road is basically another home for you. Cafe Good Luck पे खाना खा के just keep walking. There are shops and stores selling all kind of things. Even if you don't buy anything, it's a good place to just chill because it has so many pubs and restaurants. Plus, Pune का weather इतना अच्छा है कि रास्ते पर टहलना भी एक अलग ही सुकून है। टेम्परेचर्स आर अराउंड 20 डिग्रीज फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, बट अब समर्स में गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर्स आर अराउंड 30 डिग्रीज इन द समर मंथ्स। वन ऑफ द रीजंस द वेदर इज सो गुड इज प्रोबेबली दैट यहाँ ग्रीनरी बहुत है। इवन इन द सेंट्रल एरियाज ऑफ द सिटी लाइक शिवाजी नगर, मॉडल कॉलोनी एटसेट्रा, यू कैन सी ट्रीज लाइनिंग अप ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स। इफ दैट इज नॉट इनफ ग्रीनरी, पुणे हैज पार्क्स लाइक द पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन एंड द ओशो आश्रम पार्क। Yeah, it also has an Osho ashram. By the way, यहाँ crime rate भी कम है. It is less than half of the national average crime rate. This is good because this means your life and whatever money you earn will stay with you. This is even more important because according to Randstad Insights, the average annual cost to company for talent across all levels and functions in Pune stands at rupees 10.3 lakh per annum. It is the second highest in the country, only behind Bengaluru. And more importantly, यहाँ एक अच्छी comfortable lifestyle के साथ रहने के लिए 35 to 40,000 लग सकते हैं, but you can cut that down to 17 to 20,000 if you live on a budget. थोड़े entertainment cost कम कर लो, पीजी में रह लो, उसका भी एक अलग ही मजा है। मतलब यहाँ ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ के और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स तो हर सिटी में भयंकर ही होती हैं। एंड एनीवे, आगे जाके ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी जब मेट्रो बन जाएगी। हमारे जमाने में मेट्रो बन रही थी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगले 20-25 साल तक हम यही गाते रहें, मेट्रो बन रही है, मेट्रो बन रही है, मेट्रो बनने वाली है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मेट्रो बनने की कहानी बाकी शहरों की तरह, मतलब मुंबई की तरह नहीं होगी, स्पेशली कंसिडरिंग देयर ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे देखा जाए तो पुणे इज द कंप्लीट पैकेज। इट इज अ हाई इनकम, लो एक्सपेंस सिटी which is certifiably is the most livable city in the country. So if you are planning on moving to Pune, you will be welcome to a beautiful city that is rapidly developing into one of the major cities of the country. यहाँ education है, jobs है, hospitals हैं. There are 550 hospitals in Pune if you are ever feeling under the weather. Which reminds me again, weather सही में बहुत अच्छा है guys. यहाँ winter collection के कपड़े बेचने और खरीदने वाले लोगों का कोई मजाक नहीं उड़ा. So maybe come stay 4 hours away from our jam-packed local train. If you want to know anything more about Pune, please let us know in the comments. Also tell us what would you like us to cover in our next video. Don't forget to like, share and subscribe to Millions by Jupiter.